both military excellence and personal development, currently serving as the District Sainik Welfare Officer from Government of Maharashtra since December 2023. He continues to serve his community after retiring from active duty. His military service saw him deployed in diverse and challenging traits talents, including high attitude, history, leadership, and commitment. Both military excellence and personal development, currently serving as the District Sainik Welfare Officer from Government of Maharashtra since December 2023. He continues to serve his community after retiring from active duty. His military service saw him deployed in diverse and challenging traits, talents, including high altitude, ensure the operations in Srinagar, Jammu and Kashmir. He is also served in key operational areas like Pokhara and Jaisalmer, demonstrating his adaptability and commitment to duty across various landscapes. His service culminated in being awarded the prestigious Sena Medal by the President of India in 2019 for act of gallantry, a testament to his courage and Very well scripted. dedication Even to I am the not taught to write that nation. much. Furthermore, he served a year with the United Nations as part of foreign assessment in the Democratic Republic of Congo in March 20. First of all, I would like to thank Hardik for just inviting me here in such a beautiful school where it has a very different concept from other schools. Okay, and thank you to you people who have scripted my bio so diligently that I was not aware, so I could write in that way. So thank you very much. ओके, तो आज का सेशन हम क्या करते हैं कि सी आई एम फ्रॉम आर्मी, सो एवरीवन नोज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाट दे डू. ओके, व्हाट आर्मी डज? Yes, it safeguards to the nation from the outer countries, not from the internal states or internal issues. Okay, so okay, tell me who wants to join army? Okay, two, three, four, five people. I'm sure after telling this session, the number of hand raise will be more. Okay. अच्छा, engineers किसको बनना है? Who wants to become engineer? Okay. So you can also join army. Who wants to become doctor? Okay. Who wants to become a veterinary doctor who looks after the animals? No one. So you want to become? Okay, great. Okay. Who wants to become a mechanical engineer? Okay. Great. Who wants to become a communication engineer who sets the communication sets, the radio sets and all? Anyone related to electronics, electrical engineer? Okay, great. Okay. Who wants to become scientist? You want to become scientist? Great. Okay. Who wants to become? Okay, मेरे को कुछ नहीं करना. I want to become a driver only. See, है ना? We have fascination कि I want to become a driver. Okay, so you see, any field which is available on this earth is there. You have a scope to get into army. If you want to become an engineer, they can join army. If you want to become doctor, they can also join army. If you want to become a scientist, they can go in DRDO through army. If you want to become a इंटेलिजेंट मीन्स वन हु गेट्स द इंफॉर्मेशन. रॉ के बारे में सुना है आपने, है ना? बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, दे गेट द इंफॉर्मेशन. समवन गोज टू चाइना, है ना? तो इवन इफ यू वांट टू बिकम दैट स्कोप इज आल्सो देयर इन आर्मी. बट द इशू इज अभी जाना कैसे है, हाउ टू गो, राइट? सो ओके, इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, व्हाट यू विल डू, एक हाउ यू गो थ्रू. अगर आपको TCS में जाना है या IBM में जाना, और यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स,
how will you go through that? Engineer hands, those who want to become an engineer, क्या करोगे आप? What you will do? Okay, you don't know? No issue. You will complete your graduation, you will apply for the applications, you will put up your applications, right? And then you will be called for the interview, you will be interviewed technically. Acha, yes, that is the point I missed here. Acha, who knows Neeraj Chopra? Do you know Neeraj Chopra? Operations you must have seen in TVs कि जम्मू कश्मीर में फाइटिंग स्टार्ट हो गई है ना, हमला हो गया है, तो वो ऑपरेशंस होते कैसे, हाउ इट गोज, है ना, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर एनी ऑपरेशंस इन इंडिया? Yes, I have done it. I will tell you. That is called the covert operations. Covert operations are operations which is not a conventional operations. That is not told to anyone. In fact, to the higher ups, to the person who is your colleague, it is done in a very secret manner. And people goes across the country in Pakistan. They have their Pakistani weapons. They wear their Pakistani uniforms. They do the operations. They come back to India. That is called the covert operation. Similar operations are done in Jammu Kashmir also. Like we have done, we have gone in the civils, not in the uniform, with a very haphazard uniform, say a sports shoes, wearing a sports shoes, a trouser, and anything like which resembles to the kind of terrorist, how the terrorists wear. So we have gone in the remote areas. If we got an information, we went into the house, we have killed him, then we came back, and that operation was not, photo sized, or it has not come into medias. So that operation, that is called the covert operation. Great. So many questions, and I'm very, interested to answer you all. Before I spoke about those things, you almost these questions have come up. So I'm very much happy about it. So, okay, I will tell you about the interview, how it goes for the army. What do you think? How many, hours an interview should be there? If you want to, join any, if you want to become an IS, how many minutes it takes for the interview, not for the written part? 120 minutes. 120 minutes is 2 hours. That is also too much. Half an hour. Okay. 30 minutes. Okay. To become an Indian Army officer, it takes 5 days. How many? 5 days. Why is it so? By doing some types of No, no, no. types of jumping in tests. No, the physical tests are very small. That is not mandatory. You don't have to become a bodybuilder, or you don't have to be a very fit person to become an army officer initially. After that, they mold you towards the fitness. The interview lasts for 5 days. I will tell you why. There are 17 odd tests. Okay, and there are 4 psychological tests. Okay, and there is one personal interview. In other field, it is only a personal interview. They sort out your applications, they call you, they ask you a few questions related to some technical or non-technical, and then they judge you, and as per the merit, they select you, right? But Indian Army, it is totally different. The interview lasts for 5 days. The initial test is of your, they just, okay, this is a board, right? You see this picture? Okay. You have to, watch for this 30 seconds, and then they will give you 3 minutes. You have to write a story on these pictures. Neevam, the school welcomes you. You see the butterflies, the tree, the leaves, and everything. So you have to write a story. That is one kind of test. That is the screening test. And there is an intellectual test that is for just 30 minutes. That is very easy. So you have to write a story. Then what they will do? They will divide this group. Okay, 2 lanes. This 20 people, 20 people, 20 people. Then they will call you in a group. Okay, first 20 people come here, sit down, discuss what you have wrote. Okay, someone will say, I have seen jungle, this thing, where a tree is there, the ecology is this, the grass is there, the butterflies are there, and all. Then you will discuss those stories, and one of the story will be selected. Then again, other group will be called, third group will be called, fourth group will be called.
and out of say 140 or 150 initially, only 30 to 40 candidates are selected. यस, दिस द स्क्रीनिंग. एंड जो फेल हो जाता है वो पता है क्या होता है, उसकी बैग ऑलरेडी बाहर तैयार होती है. ऑल 40 odds bags are there outside, and one who has not cleared the screening, they just pick their bag irrespective of the flight timing और ट्रेन कितने बजे, they don't ask you, they pick the bag and they are moved outside. एंड जो सिलेक्ट हो जाते हैं they pick their bag and they go back to their dormitory. ओके, तो ये स्क्रीनिंग हो जाती है. उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है. It's a very, it's a game. I will tell you tree. You have to write a word in 15 seconds. I will tell you road. I will tell you jungle. I will tell you building. I will tell you school. I will tell you blood. I will tell you accident. I will tell you man. I will tell you woman. I will give you those 60 words one after one for 15 seconds. You have to write a sentence on it. That word should not be in that sentence. Okay, this is one of the tests. That is called word association test. I hope you people are not getting bored. Then again, yes. When you told the screening test, it is in that operation what you do. No, 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 not in operations. I am telling about the how to become an army officer, how the interview goes. I will tell you about the operations. Army में मैंने क्या किया, that I will tell you later on. Okay. पहले ये तो पता होना चाहिए कि how to become an officer. उसके बाद why those qualities are judged. There are 13 odd qualities which is looked into the candidates. Physical courage, moral courage, patriotism, initiative, leadership qualities, their confidence, knowledge, their intellectual level. There are 13 odd qualities which is required to become an officer. Okay. So that is one test. The other test is again like the story. You have to see the picture for 30 seconds, write a story for 3 minutes. And there are 12 stories, one after the one after the other, one after the other, one after the other. And the 13th story is totally blank. It's like blank, nothing. You write anything what you want. So the 13th story you have to write again in three minutes. Then there is one more test in it. What your teachers think about you. What your parents think about you. आपके parents आपके बारे में क्या सोचते हैं. What your friends think about you. Then your weaknesses and your strength. That you have to write in 3 minutes. तो ये आपका हो गया. तो that is then there is one SRT, situation reaction test. Situation reaction test is, okay, you are crossing a road, suddenly you saw a snake crossing, what he will do, dash 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 dash. Okay, you are going to a marriage, you saw a person fell, the accident occur, what you will do, dash 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 dash. So you have to write a situation. There are 60 odd situations they ask you, then you have to write. So this is one kind of test, that is a psychological test. And there are 17 other tests that I will tell you later on, otherwise the session will get over in that only. So small tests are there, psychological. One test I will tell you about, it is about the extempore. I believe you people must be doing it. The card is there, you have to pick this card. There are 4 odd subjects, topics in it, like India-China relation, women empowerment, the present situation, water, XYZ. There are 4 odd topics. You have to go outside the room, prepare for 3 minutes, you have to come back and then you have to deliver the lecture without saying anything, without referring anything. So you have to speak for 3 minutes, and that is the introduction, the main body, then the conclusion, and it should be not anything. कुछ भी बोला तो नहीं चलेगा. You have to, speak specific to the topic. That is one of the tests. There are this 17 other tests are there, and then there is a personal interview. So personal interview में ये नहीं पूछेंगे कि what's going between Russia and Ukraine, what is the stance of Israel, Iran, what is happening in Middle East, what is there in South America or North America, or in what's happening with India-Canada relation. But you need to know everything, because once you aware about what is happening around, you have confidence to speak, right? So that is the part of how the officer is selected. And why those qualities are required, now I will tell you how these qualities will, fetch you during your service time. See, I have done a commando course. I will tell you one interesting story. No, not commando. I will tell you the latest story which I flights land. It is the highest altitude where the advanced landing ground is there, ALG. So that area is very plain. You see 30-40 kilometers very plain, and there are Indian posts here and there is Chinese post there.
सो वी बीन देयर फॉर द रेकी, देखने के लिए कि अपनी पोस्ट कहाँ पे है, हाउ द चाइनीज ट्रूप्स आर देयर, फ्रॉम वेयर दे कैन कम, इफ यू वांट टू अटैक हाउ टू गो अबाउट इट, कहाँ पे उनको रोकना है, ऑल दोज थिंग्स। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम गए थे इनिशियली। सो आई वॉज वेरी न्यू टू दैट एरिया। सो देर इज़ अ पोस्ट कॉल्ड शक्ति, हम शक्ति के ऊपर गए, and he have briefed me ki this is the Chinese post, this is a red tower, this is a river which is flowing, and beyond that post there is a headquarter of Chinese army and all those things. So I've taken all those information. I just came down, I sat in my vehicle, then I started moving. The area was very plain. So after some time, the vehicle which was behind me, we had only two vehicles, he was honking. So मैंने बोला ये हॉर्न क्यों बजा रहा है, व्हाट हैपेनिंग, आई आस्क्ड माय ड्राइवर व्हाई इज नो, तो आई जस्ट स्टॉप्ड माय व्हीकल, द सेकंड व्हीकल केम पैरेलली, एंड उन्होंने बोला साहब हमें लगा कि आज ही अटैक करने जाना है क्या, you know why, I was going towards in China area, Chinese area. I was not aware कि I was moving in a wrong direction. That area was so plain. So that was a very small funny thing that happened with me in Ladakh. And there are other operations which we have done in Kashmir. I don't know, in 2019, you people must be in the first standard or before that. The Pulwama attack took place. The Pulwama attack में जिसने प्लान किया था, he was a Afghani person, basically from Pakistan. He was the mastermind. We have neutralized him. Neutralized यानी उसको हमने मारा था. तो operations कैसे plan होते हैं? Are you interested in listening the operations? You want to see? Okay, what I will do, I will describe here how it goes. तो क्या आता है पहले, initially the information comes to us from police, from own sources, from other intelligence agencies. Then they say कि okay, ये मोहल्ला है, say suppose camp, you know camp area? Okay, camp area में नैनमाता स्कूल के पास मिलिटेंट छुपे हुए हैं. Such kind of information comes to us, and that is little bit pin dropped, and 3-4 houses are there. That is the target house we call it. फिर उसको टैकल कैसे करना है, how to go about operations. फिर we plan, our teams are there, हमारे पास पूरा उसका इंफॉर्मेशन होता है, who all are living in camp area से, okay, XYZ people, XYZ people, XYZ people, and फिर house number, we have marked the house number. तो से सपोज 4 नंबर है, 4 नंबर में मिलिटेंट्स आर देयर, मिलिटेंट्स यानी टेररिस्ट है. तो इफ आई डोंट माइंड, इफ आई जस्ट रब इट, सपोज द मिलिटेंट इज हियर इन हाउस नंबर 4, ओके, हाउ वी गो अबाउट इट, आई विल नॉट गो दैट टेक्निकली, आपको जैसे समझ में आएगा उतना ही बताऊंगा. ओके, इफ यू आर प्लेस्ड हियर, हमारी कंपनी इज हियर, द बेस इज हियर, एंड वी हैव टू मूव दिस लोकेशन. व्हाट वी डू, वी प्लान हियर कि ये 4 नंबर घर किसका है, ओके, उसके साइड में किसका घर है, इसका घर है, इसका घर है, इसका घर है, ओके. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनसर्कल इट, बाहर नहीं निकलना चाहिए वो. तो देर आर 4/3 teams are there. So one team goes through this direction, one goes from this, and the other team, maybe of the headquarter which is here, they move from this location. And ये हम सब कैसे करते हैं, मोबाइल पे हो जाता है सब, लाइव लोकेशंस आर ऑन, प्लान यहाँ पे बन जाता है. से आनंद विल गो फ्रॉम दिस, सागर विल गो फ्रॉम दिस, एंड राहुल विल गो फ्रॉम दिस. देयर आर 3 teams. ओके, प्लान होता है, वी एनसर्कल दिस एरिया, ट्रूप्स जाते हैं, यहाँ से एक आर्मी की पार्टी लगेगी, यहाँ से लगेगी, और फिर यहाँ से लगेगी. ओके, नाउ वी स्टार्ट सर्चिंग द हाउस. पहले हम क्या करते हैं, ये घर को कभी सर्च नहीं करते, हम ये घर को सर्च करेंगे, बिकॉज वी मेक अ फायर बेस हियर. तो ओके, इस घर को सर्च कर दिया, देन वी टेक आउट पीपल फ्रॉम दिस हाउस एंड वी टेल देम टू टेक दिस पीपल आउट जिसका घर है. तो आई टेल यू माई स्टोरी व्हाट हैपेंड. सो ये सर्कल लग गया था, I searched this house, I got these people out, I told them to go inside and take these people out. तो from अच्छे लोग हैं, हम ऐसा कुछ करते नहीं, कोई मिलिटेंट्स वगैरह हम घर पे रखते नहीं है.
तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप घर वालों को बाहर निकालिए, आपका जो कर्टन्स है उसको एक साइड में कर दीजिए, जैसे ये कर्टन्स है ना, ये कर्टन्स को साइड में कर दो, एंड जो अ, आपकी विंडोज़ है, डोर्स है, वो सब कुछ बंद कर दो, बिकॉज अंदर फिर बेडरूम होगी, हॉल होगा, किचन होगा, टॉयलेट्स हो गए ना, वॉशरूम्स होंगे, सो दैट इज क्लोज्ड, दे आर कॉल्ड आउट, एंड दिस वॉज द कंपाउंड से, दिस वॉज द कंस्ट्रक्टेड हाउस, दिस वॉज द कंपाउंड, है ना, पैरामीटर. सो 6 people goes inside, me along with my buddy and one pair here and one pair here is staying there to watch. And ये जो घर सर्च हुआ था, इसके ऊपर फायरबेस बनाया था, दे वर वॉचिंग दिस हाउस कि यहाँ से कोई निकल तो नहीं रहा है, ठीक है. एंड एवरीथिंग इज ऑन रेडियो सेट्स, वी हैव दो स्मॉल से रेडियो सेट, यू मस्ट हैव सीन. एंड बाकी टीम्स होती है वो रिजर्व में यहाँ पे कहीं पे होती है. तो आई कॉल दोज पीपल आउट, मैंने पूछा कुछ है नहीं है, ही वेंट इनसाइड, उसने सब कर्टन साइड में कर दिए, विंडोज़ लगा दिए, डोर्स लगा दिए, एंड देन वी स्टार्टेड सर्चिंग. पहले हॉल सर्च कर दिया, सर्च यानी चेक किया कुछ है तो नहीं है, फिर किचन चेक की, देन व्हेन आई वेंट इनटू बेडरूम, तो बेडरूम का जो ये रॉड था ये नीचे गिरा हुआ था. सो अगेन दैट क्लिक्ड इनटू माइंड कि कुछ तो भी गड़बड़ है. एंड जो विंडो थी वो खुली थी, तो आई जस्ट सॉ कि क्या है, तो आई सॉ देयर वाज समथिंग आउट ऑफ द हाउस, सम वुडन ब्लॉक्स वे देयर. सो मिलिटेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, अंडरग्राउंड छुप जाते हैं, बहुत कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस होते हैं किसी के घर में जो आपको पता नहीं रहते. तो मेरा जो साथ वाला था उसको मैंने बोला कि ओके यू स्टैंड हियर, आई एम गोइंग आउटसाइड. एंड व्हेन आई मूव्ड आउट आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड आई वेंट टू द अदर रूम. मैं दूसरे रूम में देख रहा था, सर्च किया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू मूव ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ पे फायर खुल गया, टक 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 टक. तो मैं एकदम तुरंत नीचे आया, आई सॉ दिस गाय हु वाज स्टैंडिंग हियर, जो मेरे साथ वाला था उसको मैंने बाहर निकाला बेडरूम के, बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया, एंड वी वेर इन हॉल. ठीक है, हॉल में मैंने पूछा क्या हुआ रईस, हिज नेम वॉज रईस. तो साहब अंदर आ गया है विंडो से, उसने फायर किया, मैंने फायर किया, पता नहीं उसको लगी है कि नहीं लगी है. मैंने बोला ओके नॉट एन इशू. तो इतने टाइम में ये जितनी भी टीम्स है यहाँ पे, दे गॉट अलर्टेड, एंड देन आई टोल्ड देम नो वन विल फायर, बिकॉज हम लोग घर के अंदर ही है, ठीक है. अगर आपको मिलिटेंट भी दिखता है तो फायर मत करना. क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो अपने अपने लोग अपने, यानी वी वर इनसाइड, हमें भी लग सकती है. तो मैंने बोला कोई फायर नहीं करेगा, आई एम इनसाइड ओनली. अभी क्या करना है, वो तो अंदर आ गया है, जिंदा है नहीं है पता नहीं है. आई गॉट द ग्रेनेड्स, बॉम्ब पता है ना आपको जो ब्लास्ट होते हैं, हाँ पिन निकालते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, यू हैव सीन इन उरी उरी मूवी. ओके, तो वो ग्रेनेड्स डालता है, मस्ट हैव सीन. तो ऐसे एक लास्ट एक सीन है ना, वो ग्रेनेड डालता है, वो ब्लास्ट होता है बाद में अंदर घर के अंदर. तो आई गॉट द ग्रेनेड्स, मैंने क्या किया फिर, ये हॉल का जो रॉड है वो निकाला, एंड दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था बेडरूम का, उसको मैंने दोबारा दूर से खोला, धक्का दिया, तब तक मेरा जो साथ वाला जो बाहर का एक बड़ी था उसने ग्रेनेड लॉब किया उसके अंदर, और अगेन आई फायर्ड. तो ऐसे 3 ग्रेनेड डाले, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, इंसान अंदर है कि नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है. फिर बाहर से वन वॉज माई सीनियर वॉज सेइंग कि आनंद क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, देखता हूँ सर व्हाट इज हैपनिंग देयर. देन आई कॉल्ड दी हाउस ओनर एंड आई टोल्ड हिम टू गो इनसाइड दैट बेडरूम जो यहाँ पे थी, एंड सी व्हाट इज देयर इनसाइड. तो ही वेंट एंड ही टोल्ड कि ये 2 मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, आदिल दार एंड अदनान, A++ कैटेगरी, दे वर फ्रॉम हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स थे वो. So they went inside, the house owner went inside, he saw कि अच्छा ये तो है अंदर, और उसको मैंने बोला था दरवाज़ा बंद करके आना. So he came outside and he said कि जनाब अंदर है और ऐसा बैठा हुआ है ना, like he was leaning towards the. So मैं अंदर गया, लेफ्ट साइड में देखा वो पड़ा था, उसके टक 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 2 बस्ट यानी 6 राउंड्स. दी अदर गाय वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसको भी मैंने, देन आई न्यूट्रलाइज्ड, फिर वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है. तो दिस इज द वे हाउ द ऑपरेशन टेक्स प्लेस. अभी मैंने बोला व्हाई इफ यू वांट टू बिकम एन डॉक्टर, व्हाई डॉक्टर इज नीडेड, एंड समवन हु गॉट इंजर्ड, द आर्मी डॉक्टर्स आर देयर प्रेजेंट. ओके, यस.
When my sister grows up, she wants to be a doctor of army. Yes, that's why I told. She can become a doctor, then she can join army. Okay. So that people like us who got hurt somewhere, so she can treat us. वो हमें इंजेक्शंस दे सकती है वहाँ पे, अगर हमें गोली लगती है तो, है ना? ग्रेट ग्रेट वर्क. सो दिस इज द वे द ऑपरेशन टेक्स प्लेस, है ना? सो गाइज, ऑफिसर बन, हाँ, यस. नो, आई किल्ड बिकॉज क्या होता है, अगर आपके ऊपर कोई फायर करता है तो आपको फायर करना ही पड़ेगा. अगर मैं उसको पकड़ने जाऊंगा वो तो मुझे मार देगा, तो इट इज़ बेटर कि मैं उसको मार दूँ पहले, है ना? तो आई किल्ड हिम. तो ऐसे देर आर 18 ऑड ऑपरेशन विच आई हैव डन. ठीक है, 18 ऑपरेशन इन पुलवामा. हाँ. Is it against the law if he has a knife and you take a gun? No, no. See, if you don't fire, we will not fire. If he fires, then we will fire. No, if he has a knife. No, then we will catch him. We have done that, such kind of operations also. We have. If any your bullets are over, so To me, to me, yes, I got a splinter injury here. Splinter injury means जो बॉम्ब होता है ना, तो जब बॉम्ब फटता है तो it splits into number of pieces and that is very sharpened. It can cut anything, and if it cuts then it will start bleeding. So that part went just here, and this was teared off. I got 2 stitches here. It was Christmas 2017, 25th December 2017, in one of the operations. So I got hurt here, and few of the people who were working with me, they got the bullet injuries also. एक को तो यहाँ पे लगी है, but he got saved. I have not got the photographs today, but I will show you later on. We wear a पटका, है ना, हेलमेट जिसको बोलते हैं. तो आपने देखा होगा वो हेलमेट ऐसा राउंड होता है, नॉट दिस वाला, सिर्फ इतना राउंड होता है. तो उसको गोली यहाँ पे लगी एंड इट गॉट रिकोशेट हियर, तो गोली ऊपर चली गई. तो आई स्टिल हैव दैट फोटोग्राफ, आई विल शो यू लेटर ऑन. तो लगते रहता, कोई दिक्कत नहीं. दैट इज वाई यू हैव टू. ये बुलेट खत्म हो गई. हाँ, देन ये जो रिजर्व में मैंने बोला है ना, रिजर्व में ये जो लोग रहते हैं, दे विल फेच द एमिनेशन. ठीक है, वो हम एमिनेशन मीन्स बुलेट्स हो गए, ग्रेनेड्स हो गए, सम अदर थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड. How many bullets can one AK-47 hold? ग्रेट, 30 बुलेट्स, 30 30 बुलेट्स उसमें आते हैं, और 28 इज फिल्ड इनसाइड, बिकॉज स्प्रिंग रहता है ना, तो स्प्रिंग जाम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें 28 बुलेट्स इज फिल्ड इनटू इट. How many bullets can fit into a machine gun? It's a build, 25 rounds का एक build होता है. You have to join it and then it can fire. उसको मशीन गन बोला है ना, तो मशीन गन को हम यहाँ पे रखते हैं at this house. ये अगर टारगेट हाउस है तो यहाँ पे मशीन गन रहेगी, so that if you want to put a fire from some window, he can fire it. हाँ, Is there transport some guns or something with public transport? tenure within my army tenure only. So हमारे पास मिसाइल्स थी, and जो machine gun what you talked about, those ammunitions was there. So we had a tanks, or I will tell you one good part. इंडियन आर्मी का हाईएस्ट लेवल पे टैंक कहाँ पे? लेह में. So that we have transported from पोखरन to Leh with the help of Air Force from Chandigarh to Leh. It got transported into the flight. ठीक है, C-17 एयरक्राफ्ट में टैंक जाता है, वहाँ पे उतरेगा, देन दैट इज मूव्ड बाय रोड. एंड अभी अपने इंडियन आर्मी के टैंक्स जो है, इट हैज जस्ट क्लोज टू द चाइनीज बॉर्डर. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डन. You are in which force? I was in 12 guards, mechanized infantry, which fights. My work was to do the operations, take the tanks. अगर इंडिया पाकिस्तान में कुछ हो जाता है, then I will plan कहाँ से जाना है अंदर, कहाँ से पाकिस्तानी अंदर. Sorry, Pakistani can come from which directions, which is the approach. फिर what is the target area, वहाँ पे क्या कैप्चर करना है. ओके, अगर मैं अमरावती में जा रहा हूँ तो मुझे क्या इम्पोर्टेंट है,
by the forest department. Yes, that is refabricated, and that is even the police uses our gun, but that have a life. कितने rounds उसमें से fire हो गए? That life is decided. So when I was small, so then in train I was going. So then my dad said there is a train coming from very Yes, so there was the thanks. there was something machine. Gypsies, army vehicles, yes, that is transported when you move from one place to another. We have the trains also. We have our own trains. We call them. Yes. Car also. Yes, yes. Everything is Red transported. color car. Yes. Sir, that I see in a movie that in military base of India, someone ended up and then They fired on our camp. no, there is one watchtower. There is one watchtower. Yes. So there. I'll tell you. I'll. Okay. It's too high. India is something like this. The Jammu Kashmir. Okay. This is China. This is China. This is Afghanistan, small part, which is just this way, and this is Pakistan. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो इस बॉर्डर पे वो पोस्ट होती है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे फेंसेस होती है, एंड काफ़ी लोग का क्वेश्चन ये होता है, नॉट यू, द एल्डर पीपल, दे थिंक्स कि व्हेन आर्मी इज देयर हाउ दोज पीपल आर कमिंग इनसाइड इंडिया. तो ये जो यहाँ का एरिया है ना, इट इज़ वेरी, द टेरेन इज़ वेरी डिफिकल्ट. They attack at night and they use the knife to attack some towers. No, no, not towers. You are talking about 9/11 attack. 9/11 attack. Which attack you are talking about? Knives तो होते हैं उनके पास. Knife we also carry. We also carry knives. That is used at the last resort when you have finished with the ammunitions and you are one to one with the militant. है ना? जैसा अभी ये मेरे ऑपरेशन में अगर मेरे सब कुछ खत्म हो जाता था और बैकअप एम्यूनिशन नहीं आता, तो देन आई वुड हैव यूज्ड माय नाइफ. If a flight is hijacked, so what did you do? हाँ, they very good questions. We have hijacking team also. जो अगर hijacked होता है, if you heard about IC 814 Kandhar, yes, that NSG, you know about the NSG, National Security Guard, they are trained into it, and the officers and the soldiers who are in NSG, they are from army or from the paramilitary forces. They have their different training. उनका अलग कमांडो ट्रेनिंग चलता है फॉर 90 days. दे आर ट्रेंड कि अगर फ्लाइट आपकी हाईजैक हो जाती है तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. आई विल टेल यू वन मोर सीक्रेट दैट यू पीपल मस्ट नॉट बी अवेयर. There are certain flights, very important flights, a distance flight, say Mumbai to Delhi or Delhi to Kathmandu or say Delhi to UAE, some important flights, or someone, a very, very important person who is flying in that flight. तो उसमें भी एक सीक्रेट पर्सन बैठा रहता है विद द गन. He will wear like this. He'll go, he'll put his gun here, and he'll sit, and that sit is nominated. He will not move from that seat. So he keeps the security of the flight. One of my friend who was into this NSG, and he used to fly daily from Delhi to Kathmandu, Delhi to Kabul, Delhi to Islamabad, some flights, or some other place, say in Sri Lanka also or in Bangladesh also. तो वो security रखते हैं. तो we are prepared for it. India is that prepared कि अगर आज पाकिस्तान हमारे ऊपर फायर करता है या अंदर आता है, तो वी कैन मूव आवर फोर्सेज इन 72 hours. 72 hours, ठीक है, वी आर रेडी फॉर इट. तो एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड. एम्यूनिशंस, फ्यूल्स, ट्रेनिंग, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किससे जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग इज प्लान्ड. दैट्स वाई दिस डिसिप्लिन पार्ट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. अगर मुझे 10 बजे का टाइम दिया है और मैं 10:30 बजे आऊँ, तो देन व्हाट इज द यूज, है ना. अगर पाकिस्तान आ गए और आई एम नॉट रेडी ओनली, वो तो पूरा अंदर आ जाएगा, वो दिल्ली तक आ जाएगा. दैट्स वाई डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन टू आर्मी बट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. आई विल टेल यू,
If you are not disciplined, you will not be able to become engineer, doctor, or whatever you want to become. Right? Secondly is don't run behind the money. मेरे को पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा? What you, when you want, you have to follow your passion. किसके पीछे भागना है? पैशन. अगर मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है तो व्हाट आई डिड माई एनसीसी, आई डिड माई एबीसीसी सर्टिफिकेट, आई क्लियर माई यूपीएससी एग्जाम, सीडीएस दिया, देन आई वेंट फॉर दिस इंटरव्यू जिसके बारे में आपको मैंने बोला. एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरी सैलरी क्या है. फ्रेंकली फॉर 2 years आई वॉज नॉट अवेयर. आई हैव नॉट सीन माई पे स्लिप कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ. तो अगर वैसे ही आपको इंजीनियर बनना है तो डोंट लुक फॉर कि मेरे को पैसे कितने मिलेंगे. अगर मेरे को सपोज मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो मैं क्या नया कर सकता हूँ, व्हाट इज एलॉन मस्क इज डूइंग, ईवी में कैसे मैं जाऊँ. ठीक है, हाउ टू बिल्ड अ कार और समथिंग, अ मशीनरी विच विल रिड्यूस द टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी. है ना? तो पुट योर माइंड इनटू पैशन मोड, नॉट इनटू मनी मोड. यस, डोंट गो बिहाइंड द मनी. पैसा आते रहेगा. इट इज अ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम. So where is the main force of It is spread across. It is spread across. There is 13.5 lakh soldiers which are there in Indian Army, and Indian Army is the second largest army standing in the world. First is China, second is India. Even the US Army don't have this manpower. And 35 days में you run 10, 20, 30, 40 kilometers with 18 kilo of weights. देखो तो लगता है किसी का 18 kg वेट भी होगा यहाँ पे. यू मस्ट बी 18 kg. हाँ 24. 18 kg वेट आपका मेजर होता है. यू हैव टू वेयर दोज पैक्स, एंड 3.5 kg की वेपन होता है. एंड देन यू हैव टू रन 10 kilometers एट द वेरी 7th डे, देन 15th डे पे 20, देन 21st डे पे 30, एंड एट द वेरी लास्ट डे 35th डे पे यू हैव टू रन 40 kilometers. नाउ आई विल टेल यू, 40 किलोमीटर रन करने के लिए यू डोंट नीड टू हैव दैट एंडोरेंस, पावर, एनर्जी. आफ्टर 10-15 किलोमीटर्स के बाद योर मेंटल थिंग स्टार्ट वर्किंग. यू डोंट हैव टू गिव अप. अरे नहीं नहीं नहीं, अभी 15 हो गया, चलो 5 मोर, 20 हो गए, 20 हो गया, हाफ तो हो गया, देन 25, अगर अभी बस 10 ही किलोमीटर बचा है. तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. अभी हमारे साथ क्या हुआ था, वन ऑफ द कमांडो, माई कोर्समेट ओनली, he got injections. Okay, nothing, not an issue, you should start working again. So yes. हाँ, मेरे को यहाँ पे स्प्लिंटर इंजरी, वो बुलेट का मैं जो बता रहा हूँ, बुलेट नहीं लगी मुझे आज तक. अगर बुलेट लगी रहती थी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा, मैं और एक चीज़ बताता हूँ. ये जो स्प्लिंटर्स होते हैं ना, समटाइम्स दे आर हिट इन सम बोन्स जहाँ से हम उसको निकाल नहीं सकते हैं. तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो दे डू दी थर्मल चेक, देखा होगा आपने, या फिर मॉल में चेक करते हैं, है ना, वो टी 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 बजता है वहाँ पे. सो वी गॉट एन सर्टिफिकेट, वन ऑफ माई सीनियर गॉट एन सर्टिफिकेट कि इसको स्प्लिंटर इंजरीज है इन हिज लेग, सो दैट कैनॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि वो ऐसा फंसा है कहीं नर्व्स में तो उसको निकाल नहीं सकते. तो फिर आर्मी हमें एक सर्टिफिकेट देता है कि इसको छोड़ देना एयरपोर्ट पे, क्योंकि इसके बॉडी में मेटल है, वो निकाल नहीं सकते, दैट इज मेटल. So bullet injuries, some bullets are still in the thighs or some in bone, which is very critical. Metal bone तो हमारी होती नहीं है. हाँ हाँ, ओके ओके, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. वो क्या करते हैं, आपके ऑलमोस्ट सब क्लोथ्स निकालते हैं, दे टाई यू, एंड वो एक जंगल होता है, पेड़ होते हैं ना जंगल्स में, तो वो पेड़ के साथ आपको फिक्स कर देते हैं with rope, and you don't have anything to wear, so they almost tie you up at 10 o'clock in the morning and whole day you are tied up till 5-6. फिर तो भूख तो लगती है, खाना तो देते नहीं, पानी होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है. फिर then they take you out at 6 o'clock, then जैसे ये कि ये आलू है, ये अंडा है, this is rice raw, ठीक है, and ये आपको मैच स्टिक दे देते, they tell you कि cook yourself some water and जैसे बाम्बू देखा ना, बाम्बू के बीच में भी राइस कैन बी कुक्ड इफ यू आर अवेयर, तो वो देते हैं. एंड दे टेल यू कि यू हैव एन आवर, यू कुक योर सेल्फ एंड यू हैव इट. तो वो होने के बाद वो आपको आपकी क्लोथिंग दे देते हैं. तो क्लोथिंग कैसे दे देते हैं, जैसे इफ दिस आर द कमांडो कोर्स,
है ना. You have 5 minutes, you have to get your shoes and your clothing back to yourself and then wear it. Then they will give you a map, a very raw map. ऐसा map दे देते थे वो कि ये map है, you are at here and you have to reach here. So by that time क्या होता है, रात हो जाती है 6-7 बजे. तो